मज़ा आ गया। अभी रात का 9:10 हो रहा है। अभी देहरादून पहुँचे हम लोग दिल्ली से, और ये एक्साइटेड है बहुत, इसको आना था वीडियो में। तो यहाँ से एक होटल किया हुआ, वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर रात वहीं बिताना है। कल मॉर्निंग में पिकअप है देहरादून से साकरी के लिए। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे देहरादून। ये होटल में है एम्बेसी ट्रैकर्स ऑफ इंडिया। ये स्टेशन से 900 मीटर पे ही है, मतलब 10-15 मिनट लगा आने में यहाँ पे। तो अभी खाना वाना ऑर्डर दिए हुए, वो आएगा, खा के जल्दी ही सो जाएंगे। मीनवाइल आपको एक बार हम बाकी जो ट्रिप में है मेरे साथ उन लोग से एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बाकी तो ठंडा वैसा नहीं है यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल है। कल जब हम लोग साकरी जाएंगे तो वहाँ से एक्चुअल टेम्परेचर का आइडिया। तो मेरे साथ ट्रिप में अभी प्रशांत है, जो बहुत सारे ट्रिप में जा चुका ऑलरेडी। बिक्की है, जो संदाकू वाले ट्रिप में मेरे साथ था। और भी 3 लोग हैं नए, दिखा देते एक बार कौन कौन है। तो मेरे साथ ट्रिप में है ये 3 लोग। एक बार अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे सकता है अगर तो। हेलो, हर्ष सिंगल स्टूडेंट। क्या नाम है तेरा? हर्ष है ना? हर सिंगल तुम्हारा? सात्तकी मित्रा। ओके। Hello, I'm Yash. छोटू सिंगल। We are in Dehradun and it's 10 degrees right now. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो अभी हो रहा है सुबह का 6। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए और अभी जाएंगे बस रेलवे स्टेशन के पास, वहीं पे हम लोग का पिकअप पॉइंट है। और ठंडा यहाँ पे, सुबह भी ऐसा कुछ खास नहीं था, रात की तरह ही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। बाकी पीछे का व्यू एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत अच्छा है। ये देखो, ये वाला कुछ बस। तो अब जा रहे हैं एक बार रेलवे स्टेशन, देन वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। भाई हो गया रेडी? कुछ बचा है क्या अभी? और सारा हो गया पैकिंग? तेरा हो गया सब? स्पीकर का ही ले ले, बाकी चीज़ हम ले लेते हैं और उन लोग का देख लेते हैं क्या कर रहा है। हाँ तू नीचे जा। हो गया रेडी? Yes, boss. रेडी, चलो निकलते हैं एक बार। My name is Vikas, base manager from Trekkers of India. Room allocate कर देंगे. After 10 minutes, just freshen up and bring the documents. That what is the declaration form, medical certificate, and one ID proof, hard copies. So go and get freshen up and be at the like this ground floor by 10 to 15 minutes hardly. Okay? We'll have a small briefing session. Like we'll be telling what and all you should do during the trek. Everything will be there. So welcome guys. जनवरी एक बार हेड काउंट करेंगे. हेड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 13 14 15 are in the altitude region, so there are very like many rules and regulations to follow for yourself. So coming to the point, you are at already 6,400 feet above sea level. So itinerary. So itinerary kya? What kind of itinerary has the company shared? Like 4 days 5 nights wala itinerary, right? Yes. So 5 days 4 nights. 5 days 5 nights. Okay. So the first day I'll explain the itinerary. So the first day will be the travel from Dehradun to Sankri. So that will be your first day. And the second day will be from Sankri to Judaka Talab. And the third day will be from Judaka Talab to
Kedarkanta base camp, and the fourth day will be your summit day. Okay. From the summit directly you will be coming to the base Sankri village. Okay. So that will be your itinerary. Will be provided. So there is no limit for food. So just try not to waste the food. Okay. So keep that in mind. Like you are in the hilly mountain region, so it's very difficult to carry to to the base camps, villages, everything. Okay. And hot waters will be provided morning and evening. So hot waters will be not provided for other kind of things like washing your face, that only for drinking. Okay. So you can refill it. And clothing, coming to the clothing, your full body must be covered. Okay. Coming from the top, this woolen cap and the muffler to protect wind, like your neck from the wind. Okay. The wind will be very harsh. So, and coming to the top, so 2 t-shirts you have to carry and 1 thermal, and the other one is nice jacket which supports in -degree. Okay. Then coming to the bottom, 1 layer of thermals and 2 track pants, and coming to the bottom, two pairs of cotton socks, 1 pair of woolen socks, just in case if you are sleeping in the tents, there will be sleeping bags provided. In that you are not going to use those socks which you are using for the trek. So you have to remove those socks as it will be smelling. So you have to wear those woolen socks and sleep. Okay. And you should have some good trekking shoes till which covers till your ankle, and should have best grip. Okay, as there is a lot of snow during the summit, so the grip must be very important. And that is the brief about clothing. And coming to the toilet section, so you have to carry your toilet rolls, okay, or tissue papers. As we suggest, toilet rolls are must. So as there is a as you guys are aware of cocoa pit toilets, right? So there will be a hole dug inside the tent. So there you will be whatever like the things will be happening, and you will be using tissue paper. No water is used. As and after your what is that activity, you should cover it with the sand, or there will be some cocoa cocoa powder, right? Cocoa powder or wooden charcoals kind of thing. So you have to cover with that. And coming back, so there will be a lot of problems like the symptoms. You will get headache, then swelling in your hands, face, and vomiting sensations, dizziness, nausea. These things will occur. If so, please coordinate with our trek leads. Okay. Anybody is taking medicines? Like any kind of medicines? Diamox.